हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये सिंपल वेडिंग गेस्ट लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एंड फर्स्ट आई एम यूजिंग द प्राइमर फ्रॉम नायका एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माय फेस। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द फाउंडेशन फ्रॉम Maybelline न्यू यॉर्क विथ मी और मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। Next I'm using the Maybelline New York with concealer and applying it under my eyes, or I'm gonna shape also my eyebrows using this concealer just to highlight. Also applying on the bridge of my nose, forehead and the usual areas where I always apply and I want to highlight. And blending it with the same beauty blender in the dabbing motion, and always हमेशा ब्लेंडर से डैब डैब करके लगाना चाहिए, ड्रैग करके नहीं लगाना चाहिए। आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा अगर आप इसे ड्रैग करके लगाओगे तो, और आपका फेस केकी भी दिखने लग जाएगा। इसलिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से लगाना। एंड सेटिंग माई बेस यूजिंग द कॉम्पैक्ट फ्रॉम Maybelline न्यू यॉर्क, और मैं सारे जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Next I'm using the golden eyeshadow and applying it all over my lid. Next I'm using the black eyeshadow और मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ। एक वी शेप करते हैं और दोनों कलर को साथ में ब्लेंड करना है, गोल्डन एंड ब्लैक कलर। सो ये अभी इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है इसमें, पर जब आप करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ब्लैक और गोल्डन का यू कैन यूज़ अ सिल्वर कलर ऑल्सो, जो भी आपको पसंद हो। और गोल्डन और सिल्वर दोनों ब्लैक के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग द काजल फ्रॉम प्लम नेचर स्टूडियो काजल, और ये 5 से 6 घंटे तक टिका रहता है। एंड दिस इज मच प्रूफ काजल ऑल्सो एंड येट अफोर्डेबल। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग द मस्कारा फ्रॉम Maybelline हैप्पी गर्ल। मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको लाइनर लगाना हो तो लगाइएगा। बाकी मैंने अगर इतना ज़्यादा हेवी आई शेडो लगाया है गोल्डन एंड ब्लैक, सो नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। जस्ट अप्लाई अ काजल एंड मस्कारा एंड ऑल्सो अप्लाई ऑन योर लोअर लैशेस। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पिंक लिपस्टिक फ्रॉम Maybelline with gradiation in the shade Pink Allowed. हमेशा मुझे समझ नहीं आता कि ब्लश कौन सा कलर का लगाना चाहिए, तो मैं अपने उसको लिपस्टिक रहती वही अप्लाई कर लेती हूँ, और ड्रेस में भी बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा टाइम तक टिका भी रहता है। So you can use this trick. And next I'm using the highlighter from Neon and applying it my bridge of nose and cheekbones. So this simple look is complete and you can do this makeup wherever you want, party, wedding and festival. So this is the final look, and if you like it, give it a big thumbs up. And for more such videos, please subscribe to my channel and hit that bell icon so that you will be notified whenever I upload a video. Until then, bye.